अगर जहाँ प्लेटफॉर्म देगा ना तो मेटल बोल के हर म्यूजिक साथ में मेटल भी चलेगा. Spot on, man. Because in the name of Satan, Whoa. God, violence, hatred, destruction. I wanna check this band, but I don't even know them. There's no limit of anything in your life and in your dream. Find a way to the darkest hour in the state of illuminate. Burn alive in a state of bones in the desert. Hi guys, what's up? This is Addie here. Welcome back to my YouTube channel. Well, I hope you guys are doing good, and thank you as always guys for watching my videos. That really means a lot to me. And most of you have already guessed by now that this is my 600th vlog that I'm making today, and I wanted to do something special for our Indian metal community. As an Indian metalhead, always a proud moment for me, for all the legendary amazing metalheads and the musicians who have laid the foundation for what we see in India today. A hell lot of bands from all across the country, right? I also happened to check out some documentaries about metal concerts that's happening around the subcontinent. I've done this for, Bangalore Open Air. I have done this for Dhaka Fest that happens in Bangladesh. And well, for my 600th vlog, I thought of checking out a documentary on the one and only the Godshredder. I decided to go with OLIK BOKO brother because his untimely demise is definitely going to create an impact on many of us who grew up listening to his songs, especially people from Arunachal, the metalheads from Arunachal probably knows how empty it feels to think about the Arunachali metal scene without OLIK BOKO. So the reaction that I'm going to do it, I'm going to explain that in a bit, but all I want to say is that I'm just trying to promote the metal scene that is prevailing in this part of India, and I don't intend to violate or infringe any copyright for whatever materials that I'm going to use in this video. It's completely the author's discretion. I will share all the links, guys. It's literal way to promote all these amazing artists and people who are still working on all these amazing documentaries and trying to promote the metal culture that has been there in India, in the northeastern part of India, from a long time. And that's because we are talking about the beautiful state of Arunachal Pradesh. So we are specifically going to discuss about the metal scene of Arunachal Pradesh, a state. Arunachal has been a state that has produced some amazing musicians. It is still producing amazing musicians, but we are just going to talk about the metal scene out there. I happen to find the YouTube channel of Himalayan Watchdog. So Himalayan Watchdog is basically an audiovisual firm which is based in Arunachal Pradesh, of course, and they make documentaries and different other contents. They are active on YouTube as well as on Facebook. I will share all the information of the firm on this description, guys. If you want to reach out and want to check out their other work, please do it. So they have made a documentary on Godshredder, and basically this documentary is like a 21 minutes documentary, you can say a 22 minutes documentary, through which we will be able to understand the origins of death metal music. This documentary is more about highlighting how the death metal music scene has evolved in the state of Arunachal Pradesh, which is in the northeastern part of India, through the eyes of OLIK BOKO, Godshredder. He is someone who we are going to miss for all our life, and it's amazing video. I have not seen the documentary yet, guys. I've just played a couple of seconds, so I could not really understand. So I'm really excited to check it out, and probably when I will get to know, because even now, without even watching it, I won't be able to answer you the origins of death metal in Arunachal Pradesh, except Alien Gods and few other bands that I know from that time. So it's going to be fun. I have already made a reaction video for
OLIK Boko's Alien Gods Animal Party song couple of months back. I was really sad. Every time I listen to his music, I feel excited, I feel like headbanging, but I really feel sad. I know I'm speaking too long, but well, this video apparently will be too long. So if you guys have the patience to bear and listen to my lectures, I hope you will like it. So this video is a documentary done by Kamte Ringu, who is a part of the Himalayan Watchdog community. So massive respect to all of you guys. And before we start this reaction, guys, let me again quickly remind you that I am just simply going to watch this. It's more or less like, I'm trying to understand. It's kind of like a reaction, not exactly a reaction. It's kind of more of like knowledge sharing, trying to promote the metal scene of Arunachal to other parts of India, and to all the people who are watching my videos from different parts of the globe. I really don't own any content, and if you guys are watching this for the first time and you want to just support them, please go ahead to the YouTube channel, leave a comment behind or subscribe, or leave a message to them on their social media handles. This is the least we can do to support all these people behind the scenes who have come up with something like this, as I've made reaction videos for over hundreds of Indian artists in last couple of years. So I thought I have to dedicate my 600th blog for Arunachal Pradesh metal scene. So without wasting much time, guys, let's check out this amazing documentary of the Godshredder, aka OLIK Boko of Alien Gods. Hi guys, so we are all set to watch this. So without wasting much time, guys, let's check this out. And as mentioned in the video itself, the disclaimer that if you love their work, please go ahead. This is just a tribute, and in a way I'm just supporting the metal acts of our northeastern part of India. Oh man, this song. Rest in peace, bro. म्यूजिक में तो मैंने पहले 90s 2000 में जो भी उस समय को वो कंसर्ट होता था नालंद में होता था, ईटानगर में नहीं होता था। फिर भी ईटानगर में म्यूजिशियन है, लेकिन हम लोग नालंद जाके मैंने करना पड़ता था ऐसा। Never heard of this, man. Again, Winter Rock Fest 2004. Damn. Megaton. इनिशियली इट वाज रॉक। उस समय नाहरलगुन में बहुत सीन होता था खतरनाक, पूरा बैटल ऑफ बैंड करने वाला एक्चुअली पायरेट्स है, वायरस है, एंड दिस बैंड ऑल्सो H2O उस समय बहुत फेमस था। तो उस समय मेरा भैया लोग एक्चुअली दैट टाइम वो लोग कम्पीट करता था, क्योंकि दे वर द ओनली वन यहाँ पे एटलीस्ट कॉन्सर्ट करना होता था। उससे पहले तो आई डोंट थिंक कोई और किया भी था। दैट वाज लॉन्ग बैक, जब मेरा भैया म्यूजिक ये सब करके बैठता था। आई वाज अ किड बैक देयर। Summer. HQ. Alien, man, nice. Wow. आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उस समय कोई आई डोंट थिंक द मनी वॉज इन्वॉल्व कि इससे किसी का माता में ये नहीं था कि हम शो करने के बाद पैसा कमाएगा, एंड सबको एक्चुअली शो करने दिल था, वही प्रॉब्लम था। एंड एवरी वन सो ब्रॉक दैट टाइम, क्योंकि देखो रॉक एंड मेटल ऐसा जॉनर है कि कोई इजीली उसको नहीं लेगा, क्या है ऐसा लगेगा। इट्स नॉट लाइक किसी को कुछ दे देगा ना, ये कोई खुद से उसको लेता है। इट्स नॉट लाइक लो तुम रॉक लो के नहीं होगा, वो रॉक को खुद से फील करना पड़ता है, रॉक एंड मेटल को। मिस्टर ओलिक गॉडश्रेडर वो एक ऐसा लड़का था जो मतलब फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे डेथ मेटल लाने वाला। आइडिया
ओके जो भी हो। तो जब स्टार्ट किया यहाँ पे किसी को शायद सुनता था होगा कोई कोई, लेकिन पता नहीं था वो टाइम में रॉक या पॉप ये सब चलता था म्यूज़िक। 2003 या 4 में था होगा। तो बैंड फॉर्म एलियन को बैंड फॉर्म नहीं हुआ था उसमें। तो प्रैक्टिस के लिए मतलब क्या था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था वो टाइम में ना। प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक भाड़ा के धुना था, प्रैक्टिस के लिए दिया था, एक दिन बजाया तो उसका डायरेक्ट मालिक बोला नहीं होगा भाई आप लोग। हमने सोचा था ऐसा इतना ऐसे टाइप का भी म्यूजिक होता है, लेकिन आप लोग प्लीज बहुत डिस्टर्ब होता है ऐसे होकर ना, बहुत सारा हम लोग भी क्या है जबरदस्ती नहीं कर सकते। I never really heard of this band called Megatone, man. Maybe it's my ignorance, but I'm probably going to check their work out. I'm sure there will be some songs somewhere, right? And but having said that, this is a real struggle that I know, because back in 2006-7, even when I formed a band there, because I was also wanted to have a metal band for myself, and I know that scene because it went crazy, because every time we started covering songs of Cradle of Filth and other metal bands, you know, the neighbors around and the people around like literally got terrified, and they just literally told us like, don't do all this stuff here anymore, you know. एलियन गॉड 2005 को फॉर्म हुआ है। इसका जेनर जो डेथ मेटल जेनर है, जेनर लेके ये किया है। इससे पहले तो हॉलो बैंड था, तो उसमें ओलिक जो डेथ मेटल तो नहीं था पहले, तो ओलिक जो बाहर में सुनता था, पढ़ता था, देखता था, वो बाहर दुनिया देख चुका था, तो डेथ मेटल क्या है उसको पता था। हम लोग को पता नहीं था, नॉलेज नहीं था उसके बारे में ना। तो वो आके सुनाया था एक बार गोरगोरत बोल के एक बैंड है, गोरगोरत हमको बोला है ना राजू घाल सुनो तोड़ के। हमको नहीं, बहुत लोगों को भी सुनाया बाद में, जितना मेम्बर लोग था पप्पू लोग को भी, सबको ना। हमको फर्स्ट सुनाया तो सुन के देखो तो तुमको एक सॉलिड बैंड वाला देगा, सुन के देखो तो ऐसे करने से कैसे होगा। सुन के देखा तो गोरगोरत का था वो, बहुत ऐसा एक्सट्रीम था वो ना। तो हमको तो मज़ा लग गया, उसका जैसा जो स्पीडनेस था ना उसमें ना, जो रिफ ऑफ का स्पीडनेस था, वो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा ना, मज़ा लग गया हमको ना। तो हमने सोचा अरे मज़ा है, स्पीड है, बजाने मज़ा होगा बोले। तो हम भी उसको बोला ठीक है चलो ट्राई करेगा बोल के। Man, this is so तो lovely ऐसे to करके hear कुछ that. गाना ट्राई करता था, ये जैसे कि स्लेयर थ्रश मेटल हो गया ये सब पे, इसका भी ये सब कुछ गाना, ये रनिंग ब्लड ये सब हमको देता था, तो करता था। ऐसे करते करते वो खुद एक गाना बनाया। तो हमको बोला गाना लिख के रखा है हम लोगों ना, गाना लिख के रखा है, चलो थोड़ा ये करके देखिएगा, डेथ मेटल बना के देखिएगा बोल के। तो वो ऐसे फ्लो में बजाते वक्त देखा, तो वो रिदम भी थोड़ा ये बज रहा है, तो वो भी ठीक वोकल डाल रहा है। लिरिक्स तो वो पहले से लिख के रखा हुआ था, वो ऐसा था, टैलेंट था वो करना। लिरिक्स तो उसका बहुत था वो, तो लिखा है, लिखने के बाद ऐसे ऐसे करने के बाद तो बोला है ना चलो डेथ मेटल बैंड बनाएगा। तो हम भी राजी हो गया, तो रवि लोग हो गया, सब लोग हो गया, पप्पू लोग भी बोले चलो ठीक है करता है, डेथ मेटल ही करेगा बोल के ना। तो हम लोग डिसाइडेड किया, सब मिलके डिसाइड किया। वो लोग को भी गाना सुनाया, गौरव लोग सुनाए, वो लोग भी मज़ा लगा, वो लोग भी अच्छा लगा, चलो करेगा बोल के। तब ट्राई किया मतलब ना। तो ट्राई करने के बाद उसमें हम लोग कवर सॉन्ग ट्राई कर रहा था, करते करते उसके बीच में ओलिक एक गाना कंपोज करके उसके बाद हम लोग को भी निकलने दे के, हम लोग को ट्राई करो बोल के, उनको ओरिजिनल निकलना है बोल के ना, ट्राई करके। तो उसके बाद एनिमल पार्टी करना है। Oh my god, Animal Party. This song is immortal, man. Wow. I'm getting goosebumps right now. और एक बात है, एनिमल पार्टी में हगे ओप्पो बोल के वो भी मेंबर था, वो भी साथ में जब एनिमल पार्टी रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसमें वो भी बजाता था, हम लोग साथ में एज ए रिजन गिटारिस्ट।
लेकिन वो सोलो बहुत अच्छा मारता था, लेकिन वो सोलो नहीं खेलता था, लेकिन रिदम बजाता था वो ना आगे अप हो गया। और कुछ रीज़न था जो मतलब वो शायद आगे बजाने नहीं सके। This is death and decay. Blackened. हम लोग भी प्रैक्टिस का तो जगह रहता, तो पासीघाट जाके हम लोग ये करता था। उसका घर, उसका अपना घर था, होम टाउन है, वहाँ में 3 महीना जैसे बैठ के वहीं प्रैक्टिस करता था, वहाँ में ये सब करता था। तो ये सब सुन सुन के पासीघाट का लड़कों भी इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि उसका घर में फ्री जितना भी वॉल्यूम देख के बजाऊँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो क्या है, जितना टाउन का लड़का लोग सुनता था, आता था, देखता था, तो वहाँ से भी डेथ मेटल बैंड निकल गया, मतलब ना पहले लोग ना छोटा लोग, तो वो लोग भी डेथ मेटल बैंड वहाँ पे कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें देखा तो डेथ मेटल बैंड आ रहा, मतलब वो लोग भी इन्फ्लुएंस हो गया मतलब। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ। फिर हम लोग यहाँ पे वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद आजी पार्क में बजाया, रोड ये सब में बजाया। उसके बाद बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस हुआ यहाँ पे ईटानगर में। तो हर कोई मेटल 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 मतलब मेटल के लिए पागल हो गया था। उसके बाद Sorry to interrupt, guys. I remember there was a point, I think back in 2007 or 8, when I first saw them live, Alien got live, and they came at the show. They were the last band to perform, I remember. And the same show, Third Sovereign was also there from Assam. And by the time Alien Gods came, it was quite late, probably around 2000, probably around 10 p.m. or something. And the way he started the song with his screams, man, goosebumps, because you know I was quite new to Indian extreme metal bands. You know, I used to listen to a band from Bengal called Atmahatya. Then there was another band called, of course we know, Sahil Makija's Demonic Resurrection, and Alien Gods were definitely one of them. Well, if you are someone who has been a part of the Rock Street Journals, there were so many bands back then. I don't know if you guys can see that. You know, there were a lot of bands from different parts of northeastern part of India, starting from Nagaland, Assam, Mizoram, Arunachal, Manipur. There were lots of bands there, you know. Oh my god, I mean, like, there are a lot of bands there. And now when I think of all these amazing moments, you know, it's incredible, because what brother was telling in this interview, it's right, because they did impact a lot of us. Or else if we would have been just listening to, you know, those bands from different countries, probably we would have never thought of, like, is it even possible to do in India? But when we started seeing these acts in India itself, we realized that damn, extreme metal, dark extreme metal, or black metal, or black and death metal stuff is possible. We can make a band. We even thought of doing it, you know. So that's something that, man, it's so good to see or listen to the stories from the legends themselves. Man, this is such an incredible documentary. We should really appreciate these guys. And again, it's a request, guys. I'm just reacting to it. I'm just listening to it. I'm not the original creator. If you love this documentary, please go check out their actual work. Subscribe to them. You know, this is just a way we can promote our metal culture, or the community that has been there in the northeastern part of India, or overall India, for many years. और कई ये कहता है, कुछ ऑर्गेनाइज करने से, कुछ शो ऑर्गेनाइज कर रहा होने से ऑडिशन के लिए भेजता था, ऑडिशन के लिए ऐड देता था, तो लड़का लोग कितना आता था, सब डेथ मेटल, सबका ऑडिशन चेक करे, सब डेथ मेटल ही गाता था उसमें ऑडिशन। रॉक स्टॉक नहीं था, तो मतलब, तो वो सब देख के मतलब लगता है, मतलब बहुत बड़ा हाथ है एलियन गॉड्स का। I came to know about OLIK when, for the very first time, Palin. I saw him performing on the stage at IG Park.
It was in some show called Roots back in the year 2008 or 9 something. What I can recall from that event is that I was literally awestruck by his performance, especially that deep growling vocals and the typical cacophonous sound which only and only, I believe, OLIK could throw out. And probably that was also the first time when I was introduced to this genre called death metal, which certainly changed my course of life, and for that I'm really grateful to Alien Gods. Nice to see him also, man. Oh, it's cool. Nice, man. कॉम्पिटिशन में देखा है तो हम लोग फर्स्ट बजाया था, तो उसका बाद एलिंगोस मेंबर को देखा है तो उसमें हम स्कूल बच्चा तो छोटा है ना, बाल भी लंबा में नहीं रख सकते, क्लास 11 का पॉली वहाँ पर देखा तो बहुत राजू भैया पप्पू भैया का तो बाल लंबा नहीं था उसमें भी, लेकिन राजू भैया और ओलिक भैया को बहुत अच्छा लंबा हो के देखो बहुत, ये तो असली मेटल लेवल कह रहा है। तो उसमें फर्स्ट टाइम देखा था एलिंगोस को, बहुत एंजॉय किया। एनुअल पार्टी आई थिंक वो लोग बजाया था उस समय, तो वो लोग को देख के बाद दिस गाइस आर रियली सीरियस और हमसे भरा भी है नहीं, इफ दे कैन डू इट व्हाई कांट वी बोल के ऐसा करके, तो हम लोग थोड़ा सीरियस नहीं था एक्चुअली, एलिंग गोड्स का थ्रू ही आया है। सो आई थिंक दैट्स इट। एंड एलिंग गोड्स वे लाइक आई टोल्ड बिफोर 2011 में हम ज्वाइन किया है, एंड देन मेरा फर्स्ट शो विद एलिंग गोड इज दिल्ली सेवन सिस्टर रॉक फेस्टिवल, तो वो मेरा फर्स्ट शो था एलिंग गोड का साथ में। तो 5 पीस से 4 पीस होकर भी हम लोग काफ़ी कंटिन्यू किया है, तो ऐसे करके लाइक इट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस विथ हिम। ड्यूरिंग दोज डेज जब हम लोगों के पास अभी का जैसे हमें इतना सारा जैम पैड्स है, इंस्ट्रूमेंट्स का कोई कमी नहीं है, तो उस समय हम लोगों के पास होता नहीं था। दोस्त लोग से मांग के हम लोग यूज करता था, एंड ऑल्सो फ्रॉम द चर्च वी यूज्ड टू टेक द इंस्ट्रूमेंट्स और वी यूज्ड टू बैग। सो ऐसा सिनारियो में ओलिक भैया वाज द वन जो अरे तुम्हारे पास क्या गिटार विदार नहीं है क्या, जैम पैड नहीं है क्या, आओ ना यूज करो मेरा वाला, कोई बात नहीं। एंड देन स्ट्रेटली विदाउट इवन थिंकिंग वंस he would hand over the key to us, and that was like क्या ही बोलूं, so overwhelming, such a great thing for us कि he was like a big brother to me, not only me, to many, and एक चीज, one very interesting thing which I have noticed about him was day to day life में वो आदमी जैसा था ना, that was very much in contrast to the character of Godshredder he used to portray on the stage. It was very different and it was very interesting, I would say. माने डेथ मेटल माने वोकलिस्ट में बोलने से ओलिक ही है अभी, माने मेरा ख्याल से ना नंबर 1 इंडिया में, होल इंडिया में। उसमें भी हम लोग माने थर्ड सोवरेन लोग मिजोरम का था, वो लोग भी माने तो लोग का ठीक था, म्यूजिशियन ये सब बहुत अच्छा था, लेकिन वोकल तो इतना माने खास नहीं लगा है माने ओलिक का कंपेयर में। माने अरुणाचल को फर्स्ट रिप्रेजेंट किया है बोलने से भी होगा इंडिया में ना, नॉर्थ ईस्ट में, तो उसका थ्रू से माने उसमें भी माने माहौल भी ऐसे था कि उसके वजह से ये एलन उसका वजह से माने सब थोड़ा माने जानता है माने। This guy will be missed, man. एंड एक मेमोरी जो हम बहुत अच्छे से याद है, एंड द वे ही उसका
उसको बताया था हम लोग को। वो बोला कि हम इतना मेटल कैसा गाते हैं मालूम है बोल के ना। तो बोला कि इसको चौथा में क्या करता था, पासीघाट का नदी में जाके यहाँ तक पानी में गला को इतना धुआ कि 2 पत्थर मुंह में यहाँ डाल के उसके बाद वो करके ठीक से प्रैक्टिस करता था बोले। ऐसा होने के बाद उसका वॉइस बहुत तगड़ा हो गया। बोले हम लोग को भी ट्राई करो बोले। हम लोग तो डायरेक्ट बोल दिया बोले मैं नहीं सकेंगे तो हम लोग गिटार ही बजा के बेचेगा बोल के। तो ये मेमोरी है उसका। बहुत वेरी फन लविंग गाय। उसके साथ में ऐसा बोरिंग नहीं होगा कभी भी ना। एंड वो है अच्छा फील करता है उसके साथ में, वेरी वेलकमिंग। आदमी देखने से ऑब्वियसली बहुत रफ एंड टफ होता है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ना मेटल आदमी को बोलते हैं, बट इफ यू गेट टू नो हिम इट्स अ वेरी काइंड सोल। Brother, when you're here on stage with Alien Gods, you have to scream out your name loudly! That's right, everybody! Big it up, come on! You see, we have this Alien Gods CD. If you can tell me, how does AIDS spread? How does AIDS spread? 4 points, I'll give you the CD. Otherwise, you walk out from here feeling so ashamed of yourself. Everyone's watching you, Tanagar's watching you, alright? हमने बहुत सारा बैंड का साथ बजाया है, लेकिन हाईएस्ट टूर हमने एलियन गॉड का साथ ही किया है। इवन अब्रॉड तक भी किया है, लाइक पोखरा वहाँ जाके किया है। और जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सब तो बहुत सारा मैंने देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट टूर एलियन गॉड का साथ ही किया है मेरा जस्ट यू कैन से लाइक मेरा म्यूज़िक कैरियर जो भी है उसमें मेरा यही एक रिकॉर्ड है कि मेरा ऐसे तो हमने बहुत सारा बैंड का साथ बजाया, लेकिन हाईएस्ट मैंने एलियन गॉड का साथ ही किया है मेरा। अभी ऐसा है, मेटल बोलने से तो लड़का लोग बहुत ज़्यादा है में, मेटल बोलने से अभी भी है अंदर में हर उसका साथ म्यूजिशियन के साथ मेटल के लिए, लेकिन क्या है प्लेटफॉर्म नहीं है। कुछ शो होता है बाहर से बैंड बुला लेता है, ये होता है। तो यहाँ का लोकल को तो फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए एक्चुअली, तभी तो वो लोग आगे जाएगा। तो वो लोग को ऐसे प्रेफरेंस नहीं है कुछ बाहर से, क्या मतलब नहीं बाहर से बुला रहा है अच्छा बात है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे तो देखना चाहिए यहाँ पे कितना तकलीफ करके ये होता है। बैंड बोलने से ऐसे नहीं होता है ना, बैंड बोलने से क्या होता है बहुत तकलीफ वाला चीज़ होता है, जो मतलब बहुत सारा चीज़ ज़रूरत पड़ता है, लेकिन क्या था किसी का बैकग्राउंड नहीं होता है, बहुत अच्छा बजा लेते हैं ये होता है, लेकिन क्या होता है उसका बैकग्राउंड नहीं होता है, कुछ खेल नहीं सकते, कुछ अच्छा गिटार नहीं होता है, तो उसका वजह से वो लोग थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है। तो अगर जहाँ प्लेटफॉर्म देगा ना तो मेटल बोल के हर म्यूजिक साथ में मेटल भी चलेगा। Spot on, man. Replace in the name of Satan. God, violence, hatred, Destruction! I wanna check this band, but I don't even know them. There's totally a funny thing in your life and in your dream. Find the way to the darkest hour in the state of feeling winning. burn alive in a stand of bone. In the dust exciting soul. Jobs on them, we feel inside. Search to me till I leave inside. नो डाउट वो लोग हिंदी कर रहा है या बॉलीवुड म्यूज़िक हो जो भी हो, लेकिन उसका साथ में जैसे कि लोकल जो म्यूजिशियंस हैं वो लोग को भी उसमें प्रायोरिटी देना चाहिए थोड़ा ना, तभी तो वो लोग को प्लेटफॉर्म मिलेगा, कुछ अर्न करेगा तो उसी से कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, तभी वो लोग कुछ गियर्स ले लेगा और कोई भी हो अपना ना फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, तभी तो आगे जाएगा। सीन है, वी नीड टू वर्क अ लॉट बिकॉज बहुत गैप भी हो गया था। एंड अरुणाचल में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ गैप हो जाने से बहुत जल्दी गायब हो जाता है ना, लाइक इट्स वी आर वेरी 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 एक्टिव ऑन फॉरगेटिंग थिंग्स। ट्रेंड का पीछे बहुत जाता है। Raju and Ravina. So what happened is that they had to earn some money for their family.
we also, even me also, I had to earn some money so that I can come and bring back some money to my home. Nah. What happened is that, like, being in a band doesn't provide enough money. We play once or twice in a month or in a year. So 1 year में आपको 5,000 मिलता है, 6,000 मिलता है, 10,000 मिलता है, उससे क्या कमाएगा? आपको हर महीना में 10,000 से ज़्यादा लेके आना चाहिए ना, है कि नहीं? There was once a friend of mine, he was from France, and he came in Arunachal Pradesh to solve the problems of Arunachal Pradesh, just to like go and survey around and come back and give at least written में दे दो ना, अरुणाचल को ठीक करने के लिए क्या करेगा वो क्या? So that's I asked him also, how can I survive with metal in Arunachal Pradesh, especially in Arunachal Pradesh? Yeah, man. He said, give me one night. Then after that, he said, next morning he called me. He said, I got the answer, like that. I said, what happened? He said, if you want to be a big metal singer in Arunachal Pradesh, metal musician in Arunachal Pradesh, you have to be a rich guy. Otherwise, forget it. That's the whole point, man. The instruments are so costly. Oh man, you don't get venue. You don't have any venue. And if you play somewhere in your house, there is like thousands of complaints every day. He said like that, but then again, nobody is discouraged. Our people are like that. We think, okay, जो भी हो बाद में करके देखिएगा ना, बोलने दो. Ah man, seriously, so nice to see this interview, man. I was like, wow. I'm so glad, guys, that I watched it. Special thanks to Himalayan Watchdog production for, at least thinking of all this and bringing this out. Again, I'll request all of you, if you're still watching this video with me, guys, please go to their YouTube channel or to their Facebook, leave a comment behind if you're a true Indian metalhead, or if you want to support the metal acts there or these musicians there. That really means a lot to them as well, And my whole point just to do it was, I just wanted to do something, as I keep calling everywhere myself as an Indian metalhead. Well, if I don't, react to these videos as a reactor, I don't think I'm doing any justice. And for the first time I got to know, the story behind all these members of Alien Gods, because I knew about OLIK BOKO, I knew about them, but I've never seen any of the interviews all my life. The closest I was there to Alien Gods was maybe back in 2008 when I saw them live, but that's it. And somewhere down the line, whatever struggles and difficulties all these legendary musicians have spoken about in this video is what makes me think even now. And that's why I keep making reaction videos for these old bands, whether it's from Mizoram or from Manipur or from Assam or anywhere. I keep making reaction videos for these bands, just thinking of them. They have left behind some amazing rock and metal stuff for us, and if we don't promote this artist, who else will? I know this video has gone too long, and I'm not even sure if somebody's still watching me. If you're watching, I really appreciate you. Thank you so much if you're still watching my video. I really had to do it because I really miss Brother OLIK. I really miss Brother OLIK. I want to do something more. I have a lot of plans in my mind. I'm not sure when will I implement it, but I'll definitely bring some different styles of videos in the future. And just for the sake of all these amazing bands that we had, and Alien Gods will be Alien Gods, man, will be Alien Gods. Well, see, collecting all these Rock Street journals since the time I got to know about Great Indian Rock and Rock Street journals, and purchasing and buying CDs, I'm still supporting bands whatever possible through Bandcamp. I purchase songs, I try to buy their merchandise. I'm not telling that you have to invest a lot. Sometimes a band is selling you a song for like, let's say $1 or $2. Well, we can easily go to Bandcamp and just spend $80 or $90 or probably $100 or $200 for one track. What's wrong in that? I'm like, there's nothing wrong in that. This is how you show your love, and it's not just me doing alone. It also has to come from all of us.
me spending 80 rupees and 100 people spending individually 80 rupees means a lot together, you know. So there's a lot as a metal fans also we need to do it. I cannot bring the change alone, and I know there are a lot of people like me, even my seniors and pro seniors, who have been doing a lot of things, and my whole initiative is to promote such amazing artists, not forget our legendary amazing artists who have left behind some amazing piece of music. So well, that was the whole point for my 600th vlog. I wanted to make this reaction video, and I hope you guys had a good time. Feel free to share your stories, guys, anything that you want to share. Always there to promote good metal stuff or any form of genres. To be honest, I'm open to all forms of genres when I'm making reaction videos, but as a music lover, it has to be black metal, it has to be death metal, it has to be metal, man. For me, always as a metalhead, forever metalhead. I hope you guys had a good time, guys. I will be back soon, guys, with another reaction video supporting another deserving artist. Until then, guys, take care, stay safe, namaste. Keep supporting your local artists and don't forget to buy their merchandise. Thank you.